मेरे ख्याल से हम लोगों ने साउंड का बेसिक वाला कर लिया था, और हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी ये सब तो नहीं किया था। नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव से ही स्टार्ट करना था हमें। हम्म, है ना? याद है क्या आप लोग को? हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव से ही स्टार्ट करना था। सो reflection of sound wave. So sound wave, just like any other wave, when strike a hard surface or boundary of another medium, return back in the same medium, obeying the laws of reflection. Okay. Now the angle of reflection is equal to the angle of incidence. Okay. So angle of reflection is equal to angle of incidence. The incident ray, reflected ray, and normal at the point of incidence all lie in one plane. तो जितना ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जो भी लाइट का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड के लिए भी वैलिड है. The return of a sound wave on striking a surface such as wall, metal sheet, plywood, etc. back in the same medium is called reflection of sound wave. तो कोई अगर एक सरफेस है जहां पे लेट से साउंड जो है आ रहा है, तो ये बेसिकली सोर्स ऑफ साउंड है, और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है. ठीक है, ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है साउंड को. तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैक्सिमम साउंड का इंटेंसिटी है वो इस पॉइंट पे आएगा, इस जगह पे. और एंगल जब मेजर करेंगे तो हम मेजर करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल है. So the return of sound waves on striking a surface such as wall, metal sheet, plywood, etc. back in the same medium is called reflection of sound wave. तो ये हमारा definition हो गया reflection of sound wave का. The reflection of sound wave does not require a smooth and shining surface like a mirror. So sound gets reflected from any surface, whether smooth or hard, polished or rough. तो जैसे लाइट के केस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो पॉलिश सरफेस से बेटर रिफ्लेक्शन होता है. साउंड के केस में ऐसा नहीं है. हम लोग को शाइनिंग पॉलिश सरफेस होने की जरूरत नहीं है ना, फॉर द साउंड टू बी रिफ्लेक्टेड. The only requirement for the reflection of sound wave is that the size of the reflecting surface must be bigger than the wavelength of the sound wave. तो बेसिकली क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमारा वेवलेंथ मान लो यहाँ से है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वेवलेंथ ऐसा है. ठीक है, तो वेवलेंथ मतलब एक यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस हो गया, या क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस हो गया, तो जो हमारा ये जो जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका जो लेंथ है वो वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए, वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए. अगर ये वेवलेंथ से छोटा होगा तो बहुत हाई चांसेस है, मान लो इतना बड़ा एक सरफेस है, अब हाई चांसेस है कि साउंड ऐसे करके ऐसे निकल जाए इससे, क्योंकि इसका जो साइज है वेवलेंथ से छोटा हो गया. सो देर आर हाई चांसेस कि ये इससे बिना टकराए इसके थ्रू पास कर जाए, राइट. तो इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा. इसीलिए कह रहा है only requirement for the reflection of sound wave is the size of reflecting surface must be bigger than the wavelength of the sound wave. Now the phenomena of reflection of sound wave is utilized in making the megaphone. ये जो phenomena of reflection of sound wave है, this is utilized in making the megaphone. तो megaphone basically जो पुलिस वगैरह यूज करते हैं, वहां पे जो सोर्स होता है, अगर कोई आदमी बोल रहा है इसको पकड़ के, तो साउंड जिधर भी जाएगा वो रिफ्लेक्ट करके सामने के डायरेक्शन में ही मूव करेगा. ठीक है, तो स्ट्रेट जाना है स्ट्रेट जाएगा. तो ऑल दीज साउंड्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ दिस, from the surface of this megaphone, internal surface of the megaphone, and then it travels in the same direction, forward direction. And so that's why if 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 someone who is standing here
he'll be able to hear a louder sound as compared to जब बिना मेगाफोन के बात हुई है. So if a person has spoken without using a megaphone, the sound, gets, so sound moves in all the directions, in every direction, backward direction also. मान लो यहाँ पे कोई बात कर रहा है तो साउंड हर डायरेक्शन में मूव करेगा. और अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना इंटेंसिटी ऑफ साउंड रीच करेगा, राइट, तो वो उतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रीच करेगा यहाँ पे, बिकॉज ऑल द साउंड वेव्स विच इज गोइंग टुवर्ड्स दिस पर्सन will be more as compared to number of sound waves going here. So in this case, the sound will be heard louder as compared to in this case. So phenomena of reflection of sound wave is utilized in making the megaphone, soundboard and ear trumpet. Soundboard क्या होता है? जैसे स्टेज के पीछे एक कोई भी स्टेज है, मान लो ये हमारा स्टेज अगर तुमने बनाया है ना, परफॉर्मेंस के लिए, तो वहां पे पीछे तुम देखोगे स्टेज के पीछे, अगर मान लो परफॉर्मर यहाँ पे, तो उसके पीछे ना एक पूरा लिखा हुआ होता है कि एनुअल चैंपियनशिप ये वो, और वो वुडन जनरली बना हुआ रहता है, उसके सामने हम लोग लिख विख के चिपका देते हैं, बट एक्चुअली उसके पीछे जो ये वुडन फ्रेम है, वो वुडन फ्रेम क्या करता है, जो भी लाइट, जो भी साउंड पीछे जा रहा है उसको रिफ्लेक्ट करके आगे की तरफ भेज देता है. तो जो ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है, ऑडियंस को पूरा साउंड अच्छे से सुनाई पड़ता है, तो पीछे जो भी साउंड जाएगा वो रिफ्लेक्ट होके आगे आ जाएगा, और जो आगे बात कर रहा है वो तो आगे जाएगा ही. तो the sound waves which are traveling in the forward direction, that will anyways go, and the ones which are going in the backward direction will reflected and will again travel in the forward direction only, so that the person who is sitting in front in the auditorium, they will be able to hear the sounds better, hear the sound better. ठीक है, तो ये साउंड बोर्ड उसके लिए यूज करते हैं. उसके अलावा ईयर ट्रम्पेट वगैरह में हम लोग ये यूज करते हैं. Now, echo or production or generation of an echo. So, if a person stands at some distance from a wall and produces a sharp sound, he hears two distinct sounds. So, एक तो the original or direct sound which is heard almost instantaneously. The second heard after reflection from the wall, which is heard a little later than the original sound is produced. So, the second sound heard after reflection is called echo. ठीक है. So let's say ये एक wall है and a person is speaking. So एक तो जो वो when he is speaking, he'll be able to hear his sound only, his voice only instantly, and the other basically goes towards the wall, gets reflected from the wall and comes back. So ये तो sound है which goes to the wall and reflected back and comes back to this person, and if this whole sound which travels and gets reflected and comes back, if it comes back in a time which is greater than 0.1 second, so time taken for the sound to go and get reflected back and come back, so if it is greater than 0.1 second, then we say that he'll be able to hear a distinct echo. Why 0.1 second? Because sound retains in our brain retains the sound for 0.1 second, any sound. So if the sound which is coming after reflection is it comes after 0.1 second, the person will be able to hear a distinct echo. ठीक है, वो वाला साउंड जो पहले सुना था वो उसके दिमाग से चला गया, दूसरा जो रिफ्लेक्ट होके आया है वो 0.1 सेकंड के बाद आया, तो उसको डिस्टिंक्ट एको सुनाई पड़ेगा. बट अगर वो 0.1 सेकंड के पहले ही आ गया, तो जो साउंड पहले से हमारे ब्रेन में वो तो निकला नहीं, उसके ऊपर एक और साउंड आ गया, उसके ऊपर एक और साउंड आने की वजह से वो जो है एको डिस्टर्ब, मतलब डिस्टिंक्ट एको नहीं सुनाई पड़ता, वो किसी आवाज के ऊपर दूसरी आवाज सुनाई पड़ जाएगी, तो फिर आप उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे. सो रिफ्लेक्टेड साउंड इफ हर्ड along with the original sound is not called the echo. Only the sound heard from the original sound has ceased.
So देखो, the reflected sound if heard along with the original sound is not called the echo. Only the sound heard after the original sound has ceased is called the echo. तो अगर वो एक साउंड के ऊपर ओवरलैप कर गया दूसरा साउंड, तो उसको एको नहीं कहेंगे, है ना? वो आवाज गूंजती है, बेसिकली रेवर्बरेशन हो जाता है, वो उसको रेवर्बरेशन कहते हैं. बट अगर डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई पड़ा तभी हम उसको एको कहते हैं, मतलब 0.1 सेकेंड के बाद वो फिर से वापस आया तभी उसको एको बोलेंगे, अदरवाइज उसको रेवर्बरेशन कहेंगे. क्लियर है बच्चों? Now, condition for hearing an echo. An echo is heard only if the distance of the person producing the sound from the rigid obstacle or reflector is long enough to allow the reflected sound to reach the person at least 0.1 second after the original sound is heard. तो अगर उसका distance उस जो the person who is producing the sound, if his distance from the reflector or obstacle, if it is such that the sound takes more than 0.1 second to go and come back to the observer, if it takes a time which is greater than 0.1 second, तो उसके लिए इसको कुछ मिनिमम डिस्टेंस से ज़्यादा दूर पे रहना होगा. सो वो जो मिनिमम डिस्टेंस से ज़्यादा दूर पे अगर ये रिफ्लेक्टर होगा तभी उसको डिस्टिंक्ट एको सुनाई पड़ेगा. So an echo is heard only if the distance of a person producing sound from the rigid obstacle is long enough to allow the reflected sound to reach the person at least 0.1 second after the original sound is heard. The reason is that the sensation of sound persists in our ears. So reason is that the sensation of sound persists in our ears for about 0.1 second exciting after the exciting stimulus ceases to act. तो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था वो व्हेन इट सीजेस टू एक्ट, तो उसके 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन में साउंड रहता है. Hence to hear the echo distinctly separate from the original sound, it must reach the ears at least 0.1 second after the original sound. So if d is the distance of the observer from the obstacle and v is the speed of sound in median, okay? So let's say we have an observer here and this is the obstacle. So let's say the distance between the observer and the obstacle, if it is d, right? So the distance, so how much distance the sound travels? Now, the total distance the sound will travel is 2d and the speed is v. So 2d by v will give you the time taken by the sound to go and get reflected and come back. If 2d by v is greater than 0.1, then only we say that a distinct echo exists. So that means, so T is equal to 2D by V or D is equal to V2 by Vt by 2. So by putting T is equal to 0.1 second, so distance कितना होगा V into 0.1 by 2. V 340 meter per second है, 340 into 0.1 by 2. 34 by 2 is 17 meter. So thus to hear an echo distinctly, so thus to hear an echo distinctly, the reflecting surface in air should be at a minimum distance of 17 meter. तो जो minimum distance है इसका ये 340 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाएगा 0.1 सेकेंड टाइम, v इंटू 0.1 by 2 करेंगे 17 मीटर. सो मिनिमम डिस्टेंस जो इसको रिफ्लेक्टर को इस सोर्स से रखना पड़ेगा to hear an echo distinctly is 17 meter. Thus to hear an echo distinctly, the reflecting surface in air should be at a minimum distance of 17 meter from the listener. So if the reflector is at a distance less than 17 meter, the reflected sound gets mixed
with the original sound. ठीक है. So अगर reflector is at a distance of less than 17 meter, तब वहां पे distinct echo नहीं सुनाई पड़ता है. ठीक है. So the reflected sound gets mixed with the original sound. So if there are separate reflections, sorry, if there are repeated reflections at the reflecting surface, okay, if there are repeated reflection at the reflecting surface, the sound gets prolonged. This effect is known as reverberation. Okay. So it can easily be experienced in high tombs like Taj Mahal, Sikandra, etc. तो अगर जो है ना रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, इफ देर आर रिपीटेड रिफ्लेक्शन, मतलब मान लो हमारे पास साउंड है और सो लेट्स से कहीं पे एक बंद कमरे में हम लोग हैं और यहाँ पे आदमी कुछ बात कर रहा है, ये साउंड इधर गया, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट करके फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा है, फिर यहाँ पे इसको सुनाई पड़ा. सो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद साउंड जो इसको सुनाई पड़ेगा, है ना, तो वो अगर 0.1 सेकेंड के पहले इसके पास पहुंच रहा है तो मल्टीपल टाइम्स आएगा. यू नो, साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट करके भी आया, इधर से रिफ्लेक्ट करके भी, उधर से, तो कई तरफ से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है. तो आवाज, उसको हम कहते हैं आवाज गूंजना, राइट. तो रेवेrbेरेशन इज गूंजना ऑफ साउंड, है ना, आवाज जब गूंजती है तब उसको रेवेrbेरेशन कहते हैं. तो रेवेrbेरेशन जनरली किसी भी कोई भी एकोस्टिक्स में बोला जाता है कि इट इज नॉट डिजायरेबल फीचर, है ना. ज्यादा साउंड रेवेrbेरेट कर रहा है मतलब फिर वो जो पूरा उसका जो एकोस्टिक्स का जो इंजीनियर है उसको बोला जाता है कि इसको ठीक करने, तो वो साउंड एब्जॉर्बर्स वगैरह लगाते हैं. तो हमारा जो पूरा एम्फी थिएटर डिजाइन होता है, या फिर जो कई सारे जो म्यूजिकल कंसर्ट्स वगैरह जहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वहाँ पे एकूस्टिक्स वगैरह का, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा रेवेrbेरेट तो नहीं करेगी वहाँ पे. So thus to hear the echo distinctly, following three conditions must be satisfied. तो अगर आपको echo को distinctly hear करना है तो there are following conditions which needs to be satisfied. So thus to hear the echo distinctly, following three conditions must be satisfied. पहला है the minimum distance between the source of the sound and the reflector in air must be 17 meter. तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो सोर्स ऑफ साउंड है उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए, तभी आपको डिस्टिंक्ट एको सुनाई पड़ेगा. टू हियर द एको डिस्टिंक्टली, राइट. It is different in different medium depending upon the speed of sound in that medium. For example, inside a sea water, V is equal to 1400 meter per second. So जो distance है यहाँ पे V/2 70 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए कम से कम. ठीक है. तो हम लोगों ने देखा था 2d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बाय 2. टाइम हम लोग 0.1 सेकेंड लेके इससे हम लोग निकाल लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए. So 70 meters, that is to hear echo distinctly, the obstacle in sea water should be at a minimum distance of 70 meters from the listener. The size of the reflector must be large enough as compared to the wavelength of the sound wave. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले. Intensity of sound should be such that the reflected sound reaching reflected sound reaching back is sufficiently loud to be audible. So now determination of sound by the method of echo
So determination of speed of sound by the method of echo. So echo method can be used to determine the speed of sound in air. For this, sound is produced from a place at a known distance, say d, at least 50 meter from the reflecting surface. So अगर हम लोग को ठीक है हम लोग को मेजर करना है अभी पर्पस है we have to measure the speed of sound right so to measure the speed of sound what we do that we produce a sound from a place at a distance, say d, which is already known to us, and it should be at least 50 meter from the reflecting surface. So 50 meter से ज़्यादा होना चाहिए. The time interval t in which the echo reaches the place from where the sound was produced is noted by the stopwatch having the least count 0.01 second. तो हम लोग फिर क्या करते हैं जितने टाइम में साउंड जाकर वापस आ रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं एंड वी नोट इट डाउन ओके और उसका जो लीस्ट काउंट है उसे स्टॉप वॉच का 0.01 सेकेंड होना चाहिए जिससे कि 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग नोट करके निकाल सके ठीक है नाउ देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन डिस्टेंस हम लोग को पता ही है डिस्टेंस बाय टाइम 2d by t will give you the speed of the sound in that particular medium. Now use of echoes. So echoes find their application in sound ranging and echo depth sounding by using the ultrasonic waves. तो echo basically हम लोग सोनार टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं है ना साउंड रेंजिंग मतलब डिस्टेंस जिससे कैलकुलेट करना है सो echo find their application in sound ranging and echo depth sounding. Okay. By using the ultrasonic waves. Okay. Now the ultrasonic waves. So what is special in these ultrasonic waves? These ultrasonic waves are basically have high directivity. है ना उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता बहुत दूर तक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा सो अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसका की फ्रीक्वेंसी इज अबव 20 किलोहर्ट्ज आर मोर एनर्जेटिक देन द ऑडिबल साउंड राइट सो अल्ट्रासोनिक वेव्स frequency above 20 kilohertz are more energetic than the audible sound so they have the following three properties so they have the following three properties for their wide use. So पहला प्रॉपर्टी क्या है दे कैन ट्रैवल अनडिविएटेड थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस तो बिना डेविएट किए हुए लार्ज डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर सकता है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस सेकंड दे कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम right and third they are not easily absorbed in a medium so these are the three properties of ultraviolet sound waves which makes it so special in terms of measuring the distance and other thing echo depth ranging and other thing so pehla hai use of echoes by bats dolphins and fishermen so animals have different audible ranges of frequency right for example bats dolphins and dogs have a much higher upper audible limit than the human beings. So bats can produce and detect the sound of very high frequency up to about 100 kilohertz. Now bat fly with speed much lower than the speed of sound. The sound produced by the flying bats get reflected from an obstacle in front of it. By hearing the echo, bat come to know, even in the dark, the location of the obstacle. So they turn from their path and fly safely without colliding with it. So this process of detecting obstacle is called sound ranging. Now second is so this process of detecting obstacle is called sound ranging. Now then dolphins detect their enemy and obstacle by emitting the
ultrasonic waves and hearing their echo. They use ultrasonic waves for hunting their prey. So जैसे कि बैट्स यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है ऑब्स्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए, उसी तरह डॉल्फिन्स डिटेक्ट देयर एनिमी एंड ऑब्स्टिकल बाय एमिटिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड हियरिंग देयर एको. दे यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर हंटिंग देयर प्रे. ठीक है. उसके बाद है ट्रॉलर मैन और फिशरमैन sends an ultrasonic pulse from a source, a very high frequency vibrator, into sea and receives the pulse reflected from the shoal of fish in a detector. तो बेसिकली जो ग्रुप ऑफ फिश है उसको shoal of fish कहते हैं. सो अगर एक फिश का झुंड है कहीं पे, तो हम लोग ये अल्ट्रासोनिक पल्स फ्रॉम द सोर्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं. रिसीवर हमें बताता है कि ये कहीं क्या चीज से टकरा के आ रहा है, राइट. तो अगर शोल ऑफ फिश से टकरा के आ रहा है तो इट विल स्टार्ट बीपिंग एंड देन यू कैन यू नो देन यू कैन थ्रो योर जो वो मछली का जाल होता है वो आप नेट को फिश नेट को यू थ्रो इन द रिवर और सी वाटर एंड देन यू टेक आउट फिश, राइट. द टोटल टाइम टी of the to and fro journey of the pulse is recorded. उससे the distance d of the fish is then calculated by using the relation d is equal to vt by 2 where v is nearly 1400 meter per second. तो बेसिकली अगर हम लोग एक ये डिवाइस से अल्ट्रासाउंड भेज रहे हैं और उसको वापस रिसीव कर रहा है वो डिवाइस, तो यहाँ पे अगर सोल ऑफ फिश है तो डी डिस्टेंस आया और डी डिस्टेंस आया और डी डिस्टेंस गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2d, राइट. और स्पीड भी हमें पता है 1400 मीटर पर सेकेंड. तो अब हम लोग को डी निकालना है, कितने टाइम में वापस आया वो हमें पता चल गया. तो 2d इज इक्वल टू v इंटू टी और डिस्टेंस ऑफ दिस शोल ऑफ दिस v इंटू टी बाई 2, राइट. तो ये डिस्टेंस ऑफ द फिश, शोल ऑफ फिश निकाल के हम लोग फिर जो फिश नेट वगैरह है उस डेप्थ पे हम लोग ले जाके फिशेस को पकड़ते हैं. Now second is use of echoes by sonar. सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हुआ. सो द वर्ड सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ठीक है ना. Figure shows the principle of sonar in which ultrasonic waves are sent in sea water in all direction from the ship. These waves are received after reflection from an obstacle such as the enemy submarine, iceberg, sunken ship, etc. To find the distance of obstacle from the ship, the time interval t between the instant when waves are sent and the instant when the waves are received, after reflection from the obstacle is measured, the distance d of the obstacle from the source is then d is equal to v into t by 2, where v is the speed of ultrasonic wave in water. The depth of sea can also be found by this method. The process is then called echo depth sounding. So ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये हमारा रिसीवर है. तो ट्रांसमीटर जो है साउंड सिग्नल भेजेगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा. लेट्स से यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल जहाँ से ये साउंड सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये टोटल डेप्थ जो है इसका डेप्थ डी हो गया, राइट. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, 2d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो जो d निकालना है दैट इज स्पीड इनटू टाइम बाय 2. ठीक है. सो इससे जो हम लोग डेप्थ ऑफ सी निकालते हैं इस मेथड से, उस मेथड को हम लोग एको डेप्थ साउंडिंग कहते हैं. ठीक है. नाउ रडार और रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग.
So echo method is used to detect the presence of an obstacle and also to find its range. A signal of electromagnetic waves such as radio waves or microwaves होगा. Sorry. Such as radio waves or microwaves is sent in space, which after reflection from the object such as enemy's aeroplane in its path returns to the radar itself. Both in sonar and radar, the transmitter and the receiver are placed close to each other. ठीक है. तो जनरली क्या है, जो ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है, दोनों पास पास ही होते हैं, जिससे जितना डिस्टेंस आया है, ये इनके बीच में गैप ज्यादा नहीं होता है, तो जिससे सेम डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस आया. Both in sonar and radar, the transmitter and receiver are placed close to each other. Now, third is use of echoes in medical field. So in medical field, echo method of ultrasonic waves is used for imaging the human organs such as liver, gallbladder, uterus, womb, etc. This is called ultrasonography. Similarly, echocardiography is used to obtain the image of human heart. Now, let us do the numericals. एक सेकंड. एक मिनट बच्चों.
तो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन ईयर can detect sound in the frequency range 20 hertz to 20,000 hertz. If speed of sound is 330 meter per second, find the wavelength corresponding to the audible range of frequencies. तो हम लोग को पता है कि v is equal to, ठीक है, speed is equal to wavelength into frequency, ठीक है. So हम लोग को वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी. स्पीड है हमारा 330, सो लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 330 बाई 20 हर्ट्ज. तो 330 बाई 20 मीन 33 बाई 2 16.5 मीटर हो गया. और दूसरा लैम्डा 2 दूसरा रेंज करेंगे. सो यहाँ वी बाई एफ वन है, वी बाई एफ टू कर लोगे 330 by 20,000 hertz. So basically 16.5 को 1000 से डिवाइड कर दो तो 16.5 मिलीमीटर हो जाए. मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे मिलीमीटर. तो ये हमारा वेवलेंथ का रेंज हो गया, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, यहाँ कह रहा है डायग्राम बिलो शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले देखो जो डायग्राम दिया हुआ है. और दूसरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दे रखा है. अब डिस्प्लेसमेंट टाइम में यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ टाइम इन सेकेंड्स दे रखा है. और इसको मेजर करेंगे, ये हमारा 0 हो गया, ये 0.05, दिस इज 0.10, 0.15. उसके बाद ये हमारा 1 हो गया, ये 2 3. ठीक है ना. अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो गया. इन स्ट्रिंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. सो स्पीड जो है इसका 20 मीटर पर सेकेंड. इन ईच केस यूज ग्राफ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव. तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड दे रखा है हमें. यहाँ पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, टाइम पीरियड 0.10 सेकेंड हो गया. ठीक है. और अगर हम लोग को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना है, जैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f is equal to 1 upon t हो जाएगा. So 1 upon t means 1 by 0.1. So this will give you 10 hertz. ठीक है. और इस केस में अगर हम लोग को वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम v इंटू टी. सो 20 इंटू 0.1. सो ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर वेवलेंथ. दूसरे केस में, यहाँ वाले केस में वेवलेंथ तो डायरेक्टली निकल जाएगा. वेवलेंथ लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2 मीटर. और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड. सो बेसिकली स्पीड इज लैम्डा इंटू एफ. ठीक है. तो एफ इज स्पीड बाय लैम्डा. सो 20 बाय 2, that is 10 hertz. क्लियर है बच्चों?
क्लियर है सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, sound produced on the surface of lake takes 4.5 seconds to reach a boatman. ठीक है. How much time will it take to reach a diver inside the water at the same distance if speed of sound in water is 4.5 times the speed of sound in air? So speed of sound in air मान लो v है, तो speed of sound in water कह रहा है 4.5 times speed in air है. ठीक है. A sound produced on the surface of a lake takes 4.5 seconds to reach a boatman. Same distance, अब water में पूछ रहा है कितना time में reach करेगा. So distance is equal to speed of sound in air into time in air, and distance is speed of sound in water into time taken in water. दोनों को equate कर दो. VA into time taken in air, VW in time taken in water. Time taken in water is VA into TA. So this is V into 4.5 by VW, that is 4.5 V. Cancel हो गया. So 1 seconds लगे. Clear है बच्चों? Next question. A boy hears an echo of his own voice from a distant hill from after 1 second. ठीक है, तो एक बॉय है, एक हिल के पास खड़ा है और वहां से उसको अपनी एको सुनाई पड़ती है कितने देर बाद? 1 सेकेंड के बाद. राइट. स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द बॉय? मान लो डी डिस्टेंस जाना है, डी डिस्टेंस आना. सो 2d इज इक्वल टू v इंटू टी. d is equal to v into t by 2. So this is 350 into time 1 second divided by 2. 350 by 2 is 175 meters. Clear बच्चों? फिफ्थ वाला देखते हैं. A radar is able to detect the reflected wave from an enemy's aeroplane after a time interval of 0.02 millisecond. So time is equal to 0.02 into 10 to the power minus 3 seconds. So radar is able to detect the reflected wave from an enemy's aeroplane after a time interval of 0.02 millisecond. If the velocity of the wave is 3 into 10 to the power 8 meter per second, V is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the distance of the aeroplane from the radar. So let's say ये एरोप्लेन है, यहाँ पे एक रडार लगा है. राइट. डिस्टेंस डी डी 2d डिस्टेंस हो गया. 2d इज इक्वल टू v इंटू टी. डी निकालना है v इंटू टी बाई 2.
3 into 10 to the power 8 times 0.02 into 10 to the power minus 3 divided by 2. So this is equal to 3 into 5, 10 to the power 3, 3000 meter, which is equal to 3 kilometer. ठीक है, 5 और क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं अगली क्लास में फिर से करा दूंगा तुम्हें, और उसके बाद फिर ये डैम्पिंग वगैरह और रेजोनेंस वगैरह हम लोग कर लेंगे. ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर द डे, उसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे. यस सर. सर आप वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट भेज दीजिएगा ग्रुप पे. हाँ बेटा, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था, सॉरी मैं भेज नहीं पाया, मैं आज भेज दूंगा. यस सर, थैंक यू. एंड सर मीटिंग के बारे में आप लाइक जस्ट अ सजेशन कि आप रेकरिंग मीटिंग बना लीजिए, लाइक एक बार का कोड रहेगा और एक बार का पासवर्ड, और आप फिर वो जो जब भी आपको रिपीट करना होगा तो वो कन्वीनियंट हो जाएगा. पता है हमको रेकरिंग मीटिंग के बारे